कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से जो तेल का इशू बन गया है, डीजल ऑयल एक दिन ब दिन उसमें इजाफा ही होता है, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा जो अराइवल ऑफ टूरिज्म। दूसरा जो सोनम वांगचुक को रिलीज किया गया है, कितना अच्छा गवर्नमेंटल स्टेप है। पहले तो दूसरे सवाल को पहले ले लेते हैं, उसको तो कभी गिरफ्तार करना ही नहीं चाहिए था, उसको गिरफ्तार करना ही गलत था, और वो भी NSA के तहत। अब चलिए वो रिलीज हुए, अच्छी बात है। लद्दाख में हालात ठीक रहें, वो भी मतलब हम चाहते हैं कि जिस तरह हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हमारे साथ जो वादे हुए हैं उनको पूरा किया जाए, इसी तरह जो लद्दाख के साथ वादे हुए हैं वो भी पूरे किए जाने चाहिए। जहाँ तक आपने टूरिज़्म के हवाले से बात की, उम्मीद तो है, लेकिन टिकटों की कीमत सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे नहीं चल रही हैं, यहाँ पे भी अब वो फ्यूल सरचार्ज जो है इंडिगो ने लगाना शुरू किया है। अब कितना असर उसका हमारे सीज़न पे पड़ेगा वो देखना होगा, लेकिन तब भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो फ़िलहाल दिख रहा है शुरुआत ठीक हुई है और तादाद बढ़ेगी, यही हम चाहते हैं। अगर सोनम वांगचुक को छोड़ा गया, बाकी को भी छोड़ना चाहिए। Iran has allowed Indian ships to move toward the Hormuz. LPG gases भी उसमें है, and how do you see this move coming in? Anything that allows us to keep our prices low is a good thing. So whether that means buying oil from Russia or being able to transport our gas and fuel supplies through this strait, which otherwise is closed to everybody else, it's good for us. But at the end of the day, what we want is peace. We want this unjust war that has been imposed on the people of Iran, we want it to stop. As I've said time and again, America and Israel don't get to decide who the leadership of Iran is. Israel and the US do not get to decide who the supreme leader is. That is for the community, that is for the people, that is for the citizens of Iran to decide. The person they assassinated, Ayatollah Khamenei, he was not just a leader of Iran. He was an acknowledged religious leader for the entire Muslim Ummah. So this should not be seen as a conflict with Iran. It has far wider implications. And therefore, no matter what is done for India, fine, we will benefit. But ultimately we will benefit when peace reigns. And we want this unjust war to end. Sir, after attack on Farooq Sahab, MHA is reviewing security of all the VIPs. How do you see it? वो क्या कहते हैं, जब घोड़ा अस्तबल से भाग गया उसके बाद आप अस्तबल का दरवाज़ा बंद करते हो। अब तो हमला हो ही गया ना, ये नौबत आनी नहीं थी। क्यों आई, पहले तो वो बताइए, उसके बाद हम बाकी बात करेंगे। दिस शुड नेवर हैव हैपेंड। अब चलिए, हो गया, अल्लाह ताला बचाने वाला। टुडे महबूब also press briefing, उसने कहा कि अगर सोनम I'm sorry. Other leaders should be released. It is not my habit to comment on what other people have said. Forget her, but other leaders. You asked forget her. Other leaders should be released. Other Look, Shabir Shah has been. Just a minute. Sir, I would like to rephrase it. we have constantly been making the case that people facing minor charges or those who have spent longer in jail than their sentence would otherwise be should be released. And I think given the sanctity of this month, the holy month of Ramzan, Eid is almost a week away now, it would be in the fitness of things that similar to what was done with Sonam Wangchuk, you do in other places also. Do it here. Those youngsters who were detained last week, those who had FIRs, many of them are first-time offenders. Many of them hardly participated in a protest. I think as a measure of, as an expression of goodwill, revoking the cases against them and releasing some of these people from jail would be a good